So, good morning. I hope I am audible. Can we start now? If I am audible, write in chat that I am audible. Just write in chat that I am audible to you. Then we'll continue with the topic. Good morning. Good morning to all of you. Write in chat that I am audible. Good morning to all of you. Okay. Okay, thank you. So let me start with this topic. So yesterday you have studied the basic algebra part, that is matrices and equations. I hope all of you are comfortable with matrices and equations. That class is taken by Suja sir. Okay, I am continuing with this. We'll cover basically this algebra and calculus as a part of base course. Fine. So you already studied matrices, equations, and quadratic equations. Okay, I hope this part is clear now. And I will start with probability first. Fine. So in case of probability, we'll start with some basics. And it's okay if you do not have maths in class 12. It's okay. It's a new beginning for you. You can learn and you can easily solve these questions. Okay. So we'll start with probability first. Then I will continue with differentiation, and then जो आपका कल का सेशन होगा, then we'll take the integration part. It means 2 sessions I will be taking today and tomorrow. Fine. Even if you do not have mathematics in class 12, don't worry about it. I will give you basic idea, and you can pick some questions and you can practice that question as well. And आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट, ठीक है. So don't worry about that. कंसेप्ट जो भी है आपके क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, ठीक है. And yes, Kesav, maths is in first semester, that is business mathematics, and QT का एक सब्जेक्ट होगा, that is in second semester as well, ठीक है. So my name is Tapan Kumar, and I done my BTech and MTech and PhD as well from University School of Information and Technology, USIT GGS IPU main campus. Okay, and I am working as assistant professor in Geetha International Business School from last 4 years. I am teaching mathematics as well as computer science subjects like computer applications and database management system, and all the subjects in all computer related subjects in MC and other subjects in IT domain as well. So this is all about me, and let's start with the topic. We have 105 students. Okay, so so let me start with probability first. Okay, बस कुछ ब्लैंक ही है बिकॉज पीपीटी में बहुत ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं देने वाला हूं मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, देन विल जंप टू द क्वेश्चंस. तो मेन जो है प्रैक्टिस सेशन रहेगा मेरा, ज्यादा थ्योरेटिकल सेशन नहीं रहेगा, ना के बराबर, ठीक है.
So let's start with probability. Okay, whatever. As far as books is concerned, book I will suggest कि आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो अभी आगे टॉपिक आएगा उसके लिए आप 12th की मैथ्स रेफर कर सकते हैं. 12th की मैथ्स से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं. And that excluding the trigonometric functions, excluding the trigonometric integrations and inverse trigonometric integrations जो कि आपके सिलेबस में नहीं है. So I will give you some brief idea about differentiation and integration that is useful for your business mathematics. ठीक है? And useful for some competitive exams also. As you know that all the banking and railway, whatever competitive exams we are facing these days, we are looking at after graduation level. That competitive exams again is having 50 to 60% higher mathematics part. So even though you do not study mathematics in class 12, you need to have good concept over some parts of mathematics which are very useful for your first semester as well as for your subsequent semester as well, for competitive exam, government exam as well. Okay, fine. So let me start with the probability. If you do not understood any concept, if you do not know anything, let me know. I am starting from the very basic scratch level so that you can learn each and every basic things. So let us start with probability. This is last topic of algebra that is beneficial for your examination point of view, for your BBA point of view, and this will help you a lot in quantitative analysis QT, which is in semester 2. So probability is not in semester 1, but although it is very important topic and it will help you in semester 2. Semester 2 we have stats and probability. Okay, so let's talk about probability first, then we'll move to the differentiation part. So in probability, first let me tell you that first thing is event. First thing is event. We have some events. We have some events. Events means just you can imagine that tossing of coin, rolling of dice. Okay. So these are some. Later I will tell you the name of textbook. Okay. So just focus toward the content now. Okay. Later I will tell you about the books. So events, we have two types of event. One is called possible or impossible. Okay? Or some books, in some books it is given, it is written something like certain event, certain or sure event. So these are terms. Or unsure or uncertain. Uncertain events. Fine. So some events which are basically the sure events. It means that if some event is such that that event is possibly going to occur. It means let me tell you that. So let me give you some example. Let's say today is Tuesday. Fine. Today is Tuesday. Then what is probability that tomorrow is Wednesday? So it means it is sure event. It is possible event, sure event. 100% this event is possible. So that's why probability will be probability of this particular event. PE means probability of that particular event will be 1. Fine. And if we talk about the impossible or uncertain event, in that case, that event is not going to occur. Let's say today is Tuesday, then what is probability that tomorrow is Sunday? So it is not possible at all. So probability is 0.
Fine. So it means the value of probability is lying between 0 and 1 from possible event to possible event to impossible events. So you can conclude that the value of probability, let me close this PPT first. Fine. So first point is probability of any event lies between 0 and 1. Probability of any event lies between 0 and 1. Fine. I hope it is clear. Second thing, probability of occurrence of E plus probability of not E means E bar is equals to also 1. Sometimes it is written like this: probability of E plus probability of not E equals to 1. Fine. Third, now let's talk about the basic formula of probability. Probability of any event E, probability of any event E can be written as number of favorable cases in that particular event divided by number of sample space. Sample space means total number of outcomes. Total number of outcomes. So this NE is number of favorable cases. Number of favorable cases. And this NS is total number of cases or total number of samples. Total number of samples. It is total number of samples. Fine. So these are some basic formula for probability. These are some basic formula for probability. Fine. Now let's talk about samples. Let's talk about total number of samples. Hope you have written this. I am moving to the next whiteboard. Switching to the next whiteboard. So let's talk about, first let's talk about coins. Concept of coins. So in coins we have two things. One is head, one is tail. Fine. So how many sample space we have? Total sample. Total sample. Either we can have head or we can have tail. Fine. It means total number of, it means total number of sample. Total number of sample equals to 2. One is head, one is tail. Fine. But we can generalize. Let's see. Let's see case 2 when we are tossing two coins. This is case 1 for 1 coin. For 1 coin. Let's say we are tossing 2 coins now. 2 coins. So if we are tossing 2 coins simultaneously or ध्यान से सुनना, tossing 1 coin 2 times
tossing 1 coin 2 times or tossing 2.1 time. Both the event will generate same type of outcomes. Okay, so tossing 2.1 time. What sample space will have? So sample space will be head head, head tail, tail head and tail tail. So these are 4 sample space we can expect when we toss 2 coins simultaneously or we toss 1.2 times. Okay, tossing n coin one at a time or tossing 1 coin n time, both will generate same type of outcomes. So do not confuse with that. Sometimes this statement is something like this. So total number of sample space. So total number of sample space equals to 2 raised to the power 2. 4 sample space we have. Fine. Let's talk about 3 coin. Case 3. Tossing 3 coin. Again tossing 3 coin at a time simultaneously or tossing 1 coin 3 times. Both will generate same type of outcomes. Fine. So what sample space we have? Okay. What sample space we have? Head, head, head. Head, head, tail. Head, tail, head. Tail, head, head. Tail, tail, head. Tail, head, tail. Head, tail, tail. And tail, tail, tail. Okay. No worries. Maybe थोड़ा speed में तेज कर दिया तो I am slowing down. You can write comfortably. Fine. So these are sample space we have. We have 8 sample space as you can see. So total number of sample space is equals to 2 raised to the power 3. 8 sample space we have. Fine. Now you can understand the logic behind that. How we are calculating this. If we have 1 coin, then sample space is 2. Can I write 2 raised to the power 1? That is 2 sample space. If we have 2 coin, then sample space is 2 raised to the power 2, 4. If we have 3 coin, sample space is 2 raised to the power 3. So if we are tossing 1 coin, sample space is generated and it is 2 raised to the power 1. If we have 2 coin, sample space is 2 raised to the power 2. If we have 3 coin, tossing 3 coin simultaneously, then sample space is 2 raised to the power 3, that is 8. So we can generalize this particular concept and we can derive a formula for n number of coins. Fine. For n number of tosses or n number of coins, we can derive a particular formula. Done? So we can conclude, what we can conclude from here is, if we have 1 coin, then 2 raised to the power 1, for 2 coin के लिए 2 raised to the power 2, 3 coin के लिए 2 raised to the power 3. So n coin के लिए 2 raised to the power n. यानी क्या हम एक फॉर्मूला यहां से बना सकते हैं, for tossing n coins at a time,
total number of sample space will be 2 raised to the power n. 2 raised to the power n, where this n is number of coin or number of toss. This n is number of coin or toss. So let's say अगर मैंने 2 कॉइन को टॉस किया तो 2 raised to power 2 जनरेट हुआ, 3 कॉइन को टॉस किया तो 2 raised to power 3 सैंपल स्पेस जनरेट हुआ. So in that sense, I can conclude that if we have, let's say 5 coin, 6 coin, we are tossing 5 coin at a time, and total number of sample space will be 2 raised to the power 5. If we are tossing 8 coin at a time, the number of sample space will be 2 raised to the power 8. So this is generic formula 2 raised to the power n, fine, for particularly for coins. तो कॉइन के लिए सैंपल स्पेस आपको कभी भी निकालना होगा, तो देन टोटल सैंपल स्पेस, देन यू कैन यूटिलाइज दिस पार्टिकुलर फॉर्मूला, एंड समटाइम्स दिस फॉर्मूला इज डायरेक्टली आस्क्ड इन सम गवर्नमेंट एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स आल्सो. फाइन. किसी को कोई डाउट है तो बताइए अभी तक. ठीक है, हैव यू रिटर्न दिस? ओके. Next we talk about the dices. Okay. Can I erase this? NE is number of events. NE is number of events or number of favorable cases. Just we'll solve some questions, then we'll get to know the detailed meaning of NE and NS. NS is number of sample space. How many total samples we have? NS is total number of sample space and NE is number of favorable outcomes. Let's say we have 10 numbers, 1 to 10, and favorable cases is even numbers. So 2, 4, 6, 8 are favorable cases. So it is NE, and NS is from 1 to 10, all the numbers. So NS is number of sample space, total number of sample space, whereas NE is number of events. For books, library in charge will inform you, mail you regarding the books. They will give you some slot for book bank, and then you can collect your books. Okay. So I am erasing all this. I hope सब में लिख लिया होगा इसको. Fine. So now let's talk about dice. So in case of dice, I think all of you are aware of, we have samples like 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Fine. We have this sample
We have this sample 1, 2, 3, 4, 5, 6 for dice. Let's say I am taking case 1. For rolling 1 dice. So when you will roll one particular dice, we have sample space as 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Number of samples. So number of samples we have 6. How many samples we have? Total number of samples NS is 6. Fine. Case 2, when you are rolling 2 dice. For 2 dice. Again concept will be same. If you are rolling 2 dice at a time or rolling 1 dice 2 times, both will generate same type of outcomes. So outcomes will be 1, 1. Now first dice पे 1, second पे भी 1. Similarly, let's say फिक्स कर देता हूँ, फर्स्ट डाइस पे 1 ही आएगा एंड सेकेंड डाइस पे चेंज हो रहा है वैल्यू. सो 1, 2, 1, 3. कुछ समझ नहीं आएगा तो बताना. 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6. सिमिलरली फर्स्ट डाइस पे 2 फिक्स कर देते हैं. 2, 1 से लेके डॉट डॉट डॉट. सिमिलरली 2, 6. सिमिलरली 3, 1 से लेके 3, 6 एंड सो ऑन. फाइनली आएगा 6, 6. इस तरह से 4, 1 से 4, 6, 5, 1 से 5, 6 एंड सो ऑन. लेट मी राइट इट समवेयर एल्स. तो कहीं और लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए. So second case I am writing in the next whiteboard. Because we do not have enough space here. Case 2 for 2 dice. 2 dice we will have sample space like this: 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 and 1, 6. Similarly 2, 1 से dot 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 2, 6, 3, 1 से 3, 6, 4, 1 से 4, 6, 5, 1 से 5, 6 and 6, 1 से 6, 6. Can you tell me how many sample space we have? How many sample space we have? Can you tell me? So in this case we have 36. Yes, 36 sample space we have. Yes. So finally what I am willing to conclude is, yes, for 1 dice we have 6 sample space. Can I write 6 raised to the power 1? For 2 dice sample space is 6 raised to the power 2, that is 36. So thus for n dice we have 6 raised to the power n sample space. Fine. So for n dice we'll have sample space. So this is again a general formula, 6 raised to the power n. Fine. Here n is number
number of dice or number of roll. Fine. क्लियर है इतना कंसेप्ट? सो डाइस का और कॉइन का ये आप याद रखेंगे, 2 raised to the power n in case of coin and 6 raised to the power n in case of dice. Fine. Now last concept is concept on cards. ठीक है, आई होप कार्ड सबको पता होगा. सो इन कार्ड्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेइंग कार्ड्स. फाइन, वी हैव 52 कार्ड्स. We have 52 cards. So in 52 cards we have two types of color. One is red, one is black. Fine. In case of red we have 26 cards. In case of black we have 26 cards. In red we have heart, diamond. In black we have spade and club. In case of heart we have 13 card, diamond 13, spade 13 and club 13. All are 13 cards. And in case of let's say any particular card we have king, queen, jack, then 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and ace. Fine. This jack is also called knave. Just remember this concept. And these three cards are especially known as face card. These are called face cards. So how many face cards we have total? So how many face cards we have? Total we have 12 face cards. So we have total 12 face cards. Fine. Done. Not 13, we have 12 face cards. Face card. I am talking about the face card. Fine. So can we move to the question now?
Let's take some question. Find the probability of finding let me take some simple question first, then we'll move to a difficult one. Find the probability of finding a red card. An ace of black card, a face card, fine. Just try the first question. Try to write the answer in chat. Red card 1/2, no. Red card 1/2, yes. Good. So, how many red cards we have? How many red cards we have? It is generally asking about the red card, no? So, how many red cards we have? The number of event is getting red card. So, 26 red card we have. Now, we'll get to know the meaning of NE and NS. NS is total number of sample space. So, how many sample space we have? We have 52 cards as a whole. So, probability of this particular event E is equals to NE by NS. So, 26 by 52. Yes, answer is 1/2. Let's try second question. Second part. Ace of black card. So how many black cards we have? So black card we have 26. And how many black ace we have? 2. Yes. So this is number of event. Number of event is 2 and total number of sample space is 26. One by 13. But total number of cards, how many cards we have? Total cards we have 52. But out of 52 cards, how many black ace we have? 2. So do not confuse with these three statements. So number of event is favorable number of cases and that favorable cases is 2. So number of event is 2 and NS is again the total number of cards what we have 52. So answer is 1 by 26 again. Probability of this event is 2 by 52. So 1 by 26. Fine. Let's talk about third question, third part. Face card. How many face cards we have?
Directly I am writing the probability of event E. How many face cards we have? 12 face cards and divided by 52. So 4 upon 13. Yes, ace of black card. So how many black ace we have? We have 2 black ace out of 52 cards. So we have a deck of cards. We have a deck of cards where we have 52 cards as a whole. Fine, we have total 52 cards. But out of those 52 cards, only 2 black ace we have. So that's why 2 by 52. No, not 2 by 26. It will be 2 by 56 in case of second question, second part. Do not confuse with black word. Now, black word is only given you to choose 2 favorable cases. Black card is only given to you to choose 2 favorable cases. So how many favorable cases we have? We have 2 favorable cases. If black card, let's say black card अगर नहीं होता, अगर black card नहीं होता, तो then फिर हो जाता 1. Ace is 1, total ace is 4, and probability होता 4 by 52. Fine. So black देने के बाद 2 red eliminate हो गया. So now we have only 2 black cards. Yes, do not confuse. So this is all about this particular card-based examples. So this type of examples can be asked. Okay. So now I am giving you very good question, which is based on the coins. Find the probability for the following 4 tossing 2 coins at a time. So 2 coins we are tossing at a time. Fine. So in that case we have exactly 2 head. And I am willing to find the probability of exactly 2 head. At most 2 head. And at least 2 head. ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर दिया तो समझो कि आपको 90% प्रोबेबिलिटी आ गई. कंसेप्चुअल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है. ये करके आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा इस क्वेश्चन करने के बाद. क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी कर लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इतना है, डिवाइड कर देंगे एनी अपॉन एन प्रोबेबिलिटी यू विल गेट. बट दीज क्वेश्चंस आर अ बिट ट्रिकी. नो, लेट मी टेल यू दैट रेगुलर क्लासेस में ये सारी चीजें रिपीट नहीं होगी ना. रेगुलर क्लासेस में इस तरह की प्रोबेबिलिटी का सेशन थोड़े होगा. सो बी अटेंटिव वेयर ओनली. रेगुलर क्लासेस में सिलेबस जो है वही कराएंगे जो आपके आईपी यूनिवर्सिटी में प्रिस्क्राइब्ड है. बट हाँ, ऑब्वियसली अगर किसी को कुछ डाउट आएगा तो देन वी कैन सॉल्व. बट एडिशनली वी कैन नॉट डेडिकेट वन लेक्चर और वन क्लास ऑन प्रोबेबिलिटी. सेकेंड और थर्ड का आंसर बताइए. फर्स्ट का तो आसान है, मुझे पता है कि सभी लोग कर लेंगे फर्स्ट वाला पार्ट. तो फर्स्ट वाला है एग्जैक्टली 2 हेड. ठीक है,
पहले तो आप देखिए, दो आप इसको टॉस कर रहे हैं, अभी मैच कर लीजिए आंसर मेरे से, दो पॉइंट को टॉस कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, हाउ मेनी सैंपल स्पेस वी हैव, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो 4 सैंपल स्पेस, इस तरह का 4 सैंपल स्पेस हमारे पास आएगा। फाइन। सो फर्स्ट केस में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। सो एग्जैक्टली 2 हेड, देखिए आप यहीं पे एक ही ऑप्शन है जहां पे आपको एग्जैक्टली 2 हेड मिल रहा है, पहला केस में, हेड हेड के केस में। सो नंबर ऑफ अवेलेबल केसेस हो गया 1, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है हमारे पास, 4 है, तो 1/4, इट इज वेरी इजी, 1/4। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अभी आपको डिफिकल्टी आएगी। सबसे पहले तो आप बताइए कि एट मोस्ट 2 हेड में हम कितना नंबर ऑफ सैंपल्स लेंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो भाई, आप नॉर्मली इवेंट बोलूं मैं, नंबर ऑफ इवेंट बोलता हूं पहले, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, एग्जैक्टली 2 हेड में तो एक था। अब नाउ लेट से इन केस ऑफ एटमोस्ट 2 हेड, सो एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, ठीक है। सो मैक्सिमम 2 हेड वी कैन हैव, मिनिमम क्या ले सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ये चीज, ये इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है इस क्वेश्चन के। सो एटमोस्ट 2 हेड मीन्स maximum 2 head we can take. So minimum we can take anything. So we can take 0 head also, we can take 1 head also, and we can take 2 head also. So 0 head, 1 head and 2 head. So 0 head, ये 2 head है, ये 1 head है, ये 1 head है, और ये 0 head है, चारों ले लें। At most 2, maximum 2, minimum we can take 0. तो इसमें तो 4 आ गए, ठीक है, क्योंकि सब में देखो 0, इसमें 2 हेड, 1 हेड, 1 हेड, एंड देन सो इस केस में 4 आ गए, और ns जो है वो आपका कितना है, वो आपका 4 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्टिकुलर इवेंट इज Ne/ns, दैट इज 1। सो एट मोस्ट में कितना आंसर आया, 1, ठीक है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट इट इज अ बिट ट्रिकी। सो लेट्स टॉक अबाउट एट लीस्ट 2 हेड। अब नाउ लेट्स सी एट लीस्ट का मतलब है मिनिमम 1 हेड लेने हैं, मैक्सिमम आप कुछ भी ले लो। सो मिनिमम आपको 1 हेड लेना ही लेना है, मिनिमम 1 हेड आपको लेना है। तो मिनिमम 1 हेड लेना है, इसका मतलब क्या क्या ले सकते हैं इस केस में हम लोग, 1 हेड, सॉरी एटलीस्ट 2 हेड है, तो 2 हेड मिनिमम लेना है, 2 हेड, और 3 हेड तो इसमें है नहीं, 3 हेड इसमें नहीं है, सो वी कैन टेक 2 हेड ओनली, एटलीस्ट 2 हेड, मिनिमम 2 हेड और मोर, मतलब 2 और मोर, एटलीस्ट का मतलब है 2 और मोर। सो मोर जो है इसमें 2, एक ही पॉसिबल केसेस है, ये वाला फर्स्ट वाला। So number of event is 1, ठीक है। So number of sample space is 4. So probability of this particular event is 1/4, ठीक है। ये क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा हो जाएगा जब हम 3 हेड की बात, 3 पॉइंट्स की बात करेंगे। डू नॉट कंफ्यूज, और अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी मैं दोबारा एक और क्वेश्चन एग्जांपल ले रहा हूं, एंड देन इट विल बी क्लियर। देखिए एटमोस्ट में है मैक्सिमम लिमिट, एटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम लिमिट। सो एटमोस्ट 2 हेड वी कैन हैव, इट मींस वी कैन हैव 0 हेड, 1 हेड आल्सो, फाइन। सो मैक्सिमम 2 हेड आपको लेना है, इसका मतलब यू कैन टेक 0 हेड, यू कैन टेक 1 हेड आल्सो, ठीक है। एंड एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है मिनिमम इज 2 हेड, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 2, मैक्सिमम आप जा सकते हैं 2 और मोर यू कैन सेलेक्ट, ठीक है।
Fine. Let's take one more example, then it will be more clear to you. Maybe ये ज़्यादा लोगों को clear नहीं हुआ. ठीक है? Let's take one more example. Find the probability of getting following events if 3 coins is tossed. Fine. Again सेम ही मैं दे रहा हूं आंसर आपको, सेम ही पार्ट दे रहा हूं. Exactly 2 head, at most 2 head, and at least 2 head. Fine. Fine. So try this now. Yes, do not create nuisance on chat because all these things are being recorded. So sample space, how many sample space we can have? Head, 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 tail, head, 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 tail, head, 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 tail, 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 head, tail, head, tail, head, tail, tail, and last में all tail. Fine. So we have 8 number of sample spaces. 3 coins are tossed ना, यहाँ लिखा हुआ है 3 coins are tossed. Fine. So exactly 2 head. So इसका क्या आंसर होगा? Exactly 2 head का बताइए आंसर फर्स्ट केस का. Probability of getting exactly 2. Exactly 2 head. So in how many cases we are getting exactly 2 head? So exactly 2 head in this case, in this case, in this case, in these 3 cases only. So we have 3 by 8. So answer is 3 by 8. Yes. Almost all these students are getting the right answer. Fine. Now let's talk about at most and at least. Now this question. Now look at this question very carefully.
Okay, some answers I am getting. Just match it with me. Let's talk about getting at most two head. So probability of getting at most two head. So at most two head, maximum two head we can take. So at most two head का मतलब हुआ कि maximum दो head हम लोग लेंगे. Otherwise we can take 0 head, 1 head and 2 head. 2 से ज्यादा नहीं जाना है, मैक्सिमम 2 लेना है. ठीक है, फर्स्ट केस तो आसान था ना, फर्स्ट केस तो उसमें तो कुछ था नहीं. एग्जैक्टली टू हेड देखिए कहाँ कहाँ है. तो 3 ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें 2 हेड एग्जैक्टली आ रहा है. दैट्स व्हाई इट इज 3/8. Fine. Now in this case, at most two head. At most two head means 0 head, 1 head and 2 head will not exceed 2. Fine. तो 2 से ज्यादा exceed हम लोग नहीं करेंगे. तो 0 head we can take, 1 head we can take and 2 head we can take. तो 0 head देखिए कहाँ है. 0 head आपका जहां पे all tail हो गया वो 0 head हो गया. ठीक है. तो 0 हेड हो गया हमारे पास जहां पे ऑल टेल है. ठीक है, तो ऑल टेल सिर्फ आप ट्रिपल हेड को छोड़ के बाकी सारे केसेस ले सकते हैं. नहीं, ट्रिपल हेड जो पहला केस है जिसमें तीनों हेड आ रहे हैं, इस केस को छोड़ के बाकी सारा केसेस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं. इन दिस केस वी हैव 7 आउटकम्स, several cases और डिवाइड बाय 8. तो आंसर विल बी 7/8. हाँ, बहुत सारे बच्चों का 7/8 आ रहा है. ठीक है, सो सेकेंड का आंसर आ गया. लेट्स टॉक अबाउट थर्ड. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टू हेड. ठीक है, एट लीस्ट का मतलब मिनिमम. सो मिनिमम 2 हेड वी कैन हैव. एट लीस्ट 2 हेड का मतलब हो गया मिनिमम 2 हेड वी कैन हैव. So 2 head or we can take 2 or more we can take. So 2 and 3 head. 2 head and 3 head. At most में आपको लेना है 0 head, 1 head, 2 head. मतलब maximum 2, minimum 0 you can take. So no, जिसमें सारे टेल आ रहे हैं वो 0 head हो गया. फिर 2 टेल वाला भी ले सकते हैं, 1 head वाला भी ले सकते हैं, 2 head वाला भी ले सकते हैं. So 3 head को you can exclude only. So that's why 7/8. Fine, I hope it is clear. Now in this case we have 2 head, at least 2 head. So 2 yet more than 2 we can take. So 2 head and 3 head we can take. So 2 and 3 head की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो 2 head देखिए आप कहाँ आपको मिल रहा है. ये 3 केसेस में 2 head मिल रहा था और 2 से मोर एक ये ट्रिपल हेड जो है उसमें मिल रहा है. तो 4 ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको 2 और मोर मिल रहा है. So there are 4 cases where you can have 2 or more head. तो 4 केस ऐसे हो गए जिसमें 2 से ज्यादा हेड आपको मिल रहा है और ओवरऑल इट इज 4/8. So answer will be 1/2. Yes, fine, clear right now. So these question are a bit tricky question और ऐसे क्वेश्चन पेपर्स में भी कई बार आते हैं. एक लास्ट टॉपिक रह गया, बिल्कुल लास्ट 2 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं प्रोबेबिलिटी का. दैट इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड देन विल क्लोज द प्रोबेबिलिटी. फाइन, इतना क्लियर है सबको? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? So let's see, find the probability of getting
53 Sunday. In a non-leap year. Second part, in a leap year. Last question, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन. बाकी लोग ट्राई करें इसको. एटलीस्ट एट मोस्ट में आपको बस यही ध्यान रखना है. स्टिल सम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड. डू नॉट गेट कंफ्यूज. एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम. मिनिमम आपको इतना लेना है. मैक्सिमम यू कैन टेक एनीथिंग. एंड एट मोस्ट का मतलब है, एट मोस्ट का मतलब है कि मैक्सिमम उतना लेना है. मिनिमम आप कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, मिनिमम आप कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, तो एटलीस्ट 2 का मतलब हुआ कि मिनिमम 2 आपको लेना है. 2 से ज्यादा भी आप हेड कंसीडर कर सकते हैं या जो भी क्वेश्चन में है. और एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम लिमिट इज दैट पार्टिकुलर मिनिमम. फ्रॉम दैट लिमिट मिनिमम यू कैन कंसीडर. ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस मैंने कराए आपको एटलीस्ट एट मोस्ट के. दोबारा से एक बार रिपीट कर लेना, देख लेना इसको. या और कोई क्वेश्चन आपको नेट पे मिले इस तरह का तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग प्रोबेबिलिटी का. गेटिंग 53 संडे इन लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर. जल्दी इसका आंसर बताइए. No, we'll start calculus today only. At least differentiation we can start today. I will give you some brief idea about differentiation, and then integration we can continue with tomorrow. So (52 upon में 365 now. सेकंड का 1/7. फर्स्ट का आंसर बताइए. फर्स्ट का क्या हो? 1/7. यस, लक्ष्य का करेक्ट आंसर. केशव फर्स्ट का सही है. श्रुति नहीं, गलत है. फर्स्ट का सही है ऋषभ. ठीक है, चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं. हाँ, ऋषभ फर्स्ट सेकंड दोनों सही है. परफेक्टली फाइन. नहीं, जिसका भी 53 अपॉन में आ रहा है 365 ऐसा कुछ है, सब ये गलत है. सो लेट्स सी. तो आप क्या कहेंगे सर? इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. पहले तो आप देखिए इसमें क्या करें कि नॉन लीप ईयर. नॉन लीप ईयर समझिए इस कंसेप्ट को. 6/7 नहीं, गलत है. देखिए नॉन लीप ईयर में सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि कितने डेज हो गए. 365 डेज हो गए. ठीक है, बहुत बेसिक से बता रहा हूं. 365 डेज को अगर आप 7 से डिवाइड कीजिए, देखिए हमारे पास क्या आता है. 7 5 से देंगे 35, 1 15, 2 से देंगे 14, कैरी आएगा 1. ठीक है, क्लियर है सबको? तो आप कहेंगे सर 52 वीक आ गया. 7 से डिवाइड किया तो वीक आया ना. 52 वीक और 1 डे. ठीक है, समझना ध्यान से. नाउ ऑब्वियसली 52 वीक्स में 52 संडे आपका ऑब्वियसली कवर हो गया. ठीक है,
52 वीक में आपका 52 संडे ऑलरेडी कवर हो गया। तो ये जो 1 डे बच गया, एक दिन, इसकी संडे होने की प्रोबेबिलिटी जितनी होगी वही आंसर होगा। ठीक है, सो 1 डे जो है वो कुड बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुड बी 7 आउट ऑफ 7 डे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो इस केस में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है यानी गेटिंग 53 संडे इज 1/7, क्योंकि 52 तो श्योर इवेंट है, 52 जो है वो श्योर इवेंट है, 52 संडे होगा ही होगा। अगर ये एक लास्ट का एक दिन जो बचता है वो अगर संडे हो जाए तो हमारा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट है। सो देन वी कैन थिंक प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ दैट पार्टिकुलर 1 डे ओनली। ठीक है, आप सबको समझ आया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड क्वेश्चन, लीप ईयर। सो इन केस ऑफ लीप ईयर वी हैव 366 डेज, एंड अगर इसको 7 से आप अगेन डिवाइड करेंगे तो ये 52 वीक आएगा और 2 डे आएगा आपके पास, 2 दिन आपके पास बचेंगे। तो फिर से वही कंसेप्ट है, 52 वीक्स है तो 52 संडे आपके पास ऑलरेडी हो गया। अब ये 2 दिन संडे होने की प्रोबेबिलिटी 2 आउट ऑफ 7, 2 डेज आउट ऑफ 7। सो इसमें इस केस में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ लीप ईयर कितना हो गया, 2/7। क्लियर है ये चीज? किसी को डाउट है इसमें? यस, नाउ यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। श्रुति का भी आंसर सही। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी of getting 53 Sunday in case of leap year and in case of non-leap year as well. Fine? किसी को कोई डाउट? Okay. So thank you. चलो, okay. So this is all about the probability section. ठीक है? And now we'll start with the calculus. Clear कर दो इतना? तो इसको बहुत अच्छे से करना है, एक बार आप प्रैक्टिस अपना करते रहना। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इसमें डिफरेंशिएशन की। आज पहले बात करेंगे, थोड़ा छोटा टॉपिक ले रहे हैं, हल्का टॉपिक ले रहे हैं। देन विल टॉक अबाउट इंटीग्रेशन इन नेक्स्ट सेशन। कल हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं पहले डिफरेंशिएशन। So this is all about algebra. Algebra पूरा कंप्लीट हो गया आपका। कल सर ने कराया था मैट्रिसेस, इक्वेशंस, एंड आज मैंने करा दिया आपको प्रोबेबिलिटी। तो अलजेब्रा पूरा कंप्लीट हो गया, अब बच गया आपका कैलकुलस। तो कैलकुलस में इन केस ऑफ कैलकुलस से, तो कैलकुलस बहुत मतलब आई मीन की थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है। बस 5 मिनट्स का ब्रेक नहीं दे रहा हूँ, बस 10-15 मिनट्स आप कर लें, फिर हम लोग थोड़ा आपको 15 मिनट्स पहले ही छोड़ दूंगा। ठीक है, कैलकुलस में हम लोग जो है क्या करने वाले, इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, 2 टॉपिक इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, ऐसे कैलकुलस स्टार्ट होता है फंक्शन से। फंक्शंस में हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूटी की, फंक्शन में बात करेंगे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की, कंटिन्यूटी की बात करते हैं, एंड देन हम बोलते हैं फंक्शंस जो है कंटीन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, देन हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। ठीक है, बट जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही करा रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी लेवल में हम लोग नहीं जाएंगे, जितना बीबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है हम लोग उतना ही करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अभी फिलहाल डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन की यस, फिजिक्स में भी अगर किसी के पास फिजिक्स होगा तो फिजिक्स में भी डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। यस, प्रोबेबिलिटी इज ओवर। यस, प्रोबेबिलिटी इज ओवर, नथिंग इज लेफ्ट इन प्रोबेबिलिटी। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपको कवर करा दिए मैंने, कार्ड्स करा दिया, कॉइन करा दिया, डाइस करा दिया। ठीक है,
छोटे मोटे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी बुक से, ठीक है, 10-12 की बुक से। चलिए कुछ हम लोग इसमें फॉर्मूले करेंगे, फिर इसके हम लोग क्वेश्चन भी साथ के साथ करते जाएंगे डिफरेंशिएशन में। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का कि d by dx, this is operator, d upon में dx is operator of differentiation, एंड यहां पे कुछ हम लोग वैल्यू लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, फंक्शंस इज रिटन, वी कैन राइट फंक्शंस इन द ब्रैकेट, ठीक है। और अगर यहां पे कुछ आप कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं k और c, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0, ठीक है। ठीक है, फिजिक्स में अब आपने कितना डिफरेंशिएशन पढ़ा है? अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ब्रीफ पढ़ा है तो दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। सेकेंडली डिफरेंशिएशन का एक सेकेंड फॉर्मूला होता है d बाय dx, x रेज टू द पावर n इक्वल्स टू n x रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल इस पे देखते हैं पहले। तो मैंने जो आपको कहा अभी, डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो मान लो पहला कुछ ऐसा दे दिया 500 को डिफरेंशिएट करो, या ऐसा कुछ दे दिया 1/5000 को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो कैसे होगा, तो ये बताया, हाँ, d बाई डी एक्स ऑफ k इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली यहाँ पे k की जगह पे आप कुछ भी ले लीजिए, d बाई डी एक्स, इधर इट इज 500, अगेन इट इज इक्वल टू 0, एंड अगर ये होता है मेरा d बाई डी एक्स 1/5000, कुछ भी हो, कांस्टेंट वैल्यू होगा तो हमेशा आंसर 0 आएगा। प्रीवियस स्लाइड, अच्छा, ठीक है। सो कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट की जगह पे कुछ भी वैल्यू आप ले लो, इधर इट इज 500, 5000, कुछ भी वैल्यू आप लेते हैं, कांस्टेंट अगर वैल्यू होगा d बाई डी एक्स के अंदर, तो दैट विल बी 0 ओनली, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी सेकेंड फॉर्मूला पे क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर लेट से 5 है, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, मान लो 2/3 x रेज टू पावर 3, ठीक है। क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इस केस में हम लोग? x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, d बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर n। देखो ये n जो है पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर x का पावर 1 कम हो जाएगा, n-1। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट केस में यस 5x रेज टू द पावर 4, यस सही है, d बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर 5, सो इट विल बी 5x रेज टू द पावर 4। क्लियर है सबको? देखो 5 किनारे मल्टीप्लाई हो गया और x का 1 पावर कम हो गया, यस फाइन, बहुत लोगों का आ रहा है सही आंसर।
सेकेंड का देखिए डी बाई डी एक्स, ये है 2/3 एक्स रेज टू पावर 3। फाइन, सो इट विल बी 2/3, पहले से कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं करते, डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है नॉर्मली। सो विल कीप 2/3 आउटसाइड द डिफरेंशिएशन। सो वी कैन अगेन राइट लाइक दिस, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 3। कांस्टेंट को हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर करना है। सो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू पावर 3 को करेंगे तो क्या होगा 3x²। ठीक है, सो 3 गेट कैंसिल्ड, सो आंसर विल बी 2x²। यस, बहुत सारे बच्चों का सीखा। क्लियर है इतना? ठीक है, क्लियर कर दें इसको। कैन आई इरेज? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी थोड़ा डिफिकल्टी देता हूं। रूट एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स की वैल्यू सक्षम अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना वो ऐसा कर रहे हैं जैसे डी बाई डी एक्स है, 2/3 था, एक्स के पावर 3 है। तो समझो इस चीज को, अगर नहीं समझ आया तो मैं रफ में बता रहा हूं, तब तक बाकी लोग इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 2/3 कांस्टेंट है, तो वी कैन टेक दिस कांस्टेंट आउटसाइड दिस डिफरेंशियल एंड विल राइट लाइक दिस अगेन। ठीक है, एंड देन 2/3 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का करेंगे तो इट बिकम 3x²। देखो 3 किनारे आ गया, x का पावर 1 कम हो गया तो x का पावर 2 हो गया, तो 3 गेट कैंसिल्ड, सो आंसर इज 2x²। ठीक है, सक्षम, इज इट क्लियर नाउ? चलो देखते हैं, बहुत लोग का माइनस में आ रहा है, बहुत लोगों का प्लस में आ रहा है। सो सबसे पहली चीज तो क्या याद रखेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स, रूट एक्स को कैन आई राइट एक्स रेज टू द पावर हाफ, वेरी सिंपल। सो नाउ हाफ को वही फॉर्मूला लगाओ, डी बाई डी एक्स, अभी जो फॉर्मूला बताया, एक्स रेज टू द पावर एन, दैट इज एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, सो एन पहले किनारे लेके आइए, हाफ इंटू एक्स एन माइनस 1, सो हाफ माइनस 1 ना, एन की जगह पे हाफ को ट्रीट कीजिए। सो कैन आई राइट लाइक दिस, हाफ एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ। और एक्सपोनेंट में किसी भी चीज के पावर अगर माइनस होता है, एक्स रेज टू पावर माइनस ए, इट कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू द पावर ए, 1 में एक्स रेज टू पावर ए। सो 1/2 एंड दिस इज रिटन एज 1/x के पावर हाफ, और x के पावर हाफ क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, सो 1/2 रूट एक्स इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बच्चों का फाइन, क्लियर है इतना? 1/2 रूट एक्स आएगा, यस, नॉट 2 रूट एक्स, इट इज 1/2 रूट एक्स। इज इट फाइन? और डिफरेंशिएशन में 2 रूल होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनफैक्ट 3 होता है, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल और चेन रूल। ठीक है, दैट विल डिस्कस नेक्स्ट। आई एम इरेजिंग दिस वन। ठीक है, अब इसमें ये 2 कंसेप्ट बताएं, तीसरे की बात कर रहे हैं, थर्ड में पहले बता रहा हूं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ठीक है,
What is this product rule? If we have to differentiate product of two functions, d by dx, and let's say we have two functions u and v in product form, and we need to differentiate these two functions. So in that case, what we will do is we'll take one function constant at a time. और ये बताया था मैंने, constant होता है तो उसको डिफरेंशिएशन से हम लोग बाहर ले आते हैं. So u constant ले लिया, u को बाहर ले लिया, और v का डिफरेंशिएशन dv by dx प्लस, अगर मैंने v को कांस्टेंट लिया तो v बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन के, और ये हो जाएगा du by dx. क्लियर है ये चीज? k is constant. K is constant. Any constant. K is any constant. Fine. No, this is live session. You cannot watch it later. So u dv by dx, is it clear? आप u को कांस्टेंट मान लिया मैंने, तो डिफरेंशिएशन से बाहर ले आए, तो u dv by dx प्लस v इंटू du by dx. अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा ना इसका, देन ये आपको और क्लियर हो जाएगा थर्ड वाला फॉर्मूला. फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, दो फंक्शन है u और v, दोनों को डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट में है ये दोनों. अगर मैं फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट मानता हूं, देन वी कैन टेक दैट फंक्शन आउटसाइड द डिफरेंशियल. सो u dv by dx ऐसे याद रखिए, प्लस v du by dx. एक एग्जांपल ले रहा हूं, देन यू विल गेट टू नो कि क्या हुआ इस क्वेश्चन में. जैसे मान लो मुझे d by dx करना है डिफरेंशिएट, और मान लो मेरे पास है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, और एक और कोई कुछ और फंक्शन ले लेते तो ज्यादा बेटर हो जाता. लेट्स से लॉग, लेकिन लॉग भी मैंने बताया नहीं आपको. अच्छा, भी बता दूंगा साथ के साथ. लॉग एक्स, एक फॉर्मूला पहले देख लीजिए कि log x का डिफरेंशिएशन होता है, ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला दिया था ना हमने, इसके बाद एक फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे फोर्थ, कि अगर आप डिफरेंशिएट करोगे log x को ना d अपॉन में dx ऑफ लेट मी राइट इट अगेन, d अपॉन में dx ऑफ log x ना बेस e ऑब्वियसली होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है. ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को. log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 by x. तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, एक x है और एक log x है. ठीक है, दो फंक्शन है. तो दोनों फंक्शन में से अब एक को u एक को v इस तरह से ट्रीट कीजिए. तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था पीछे, लेट मी राइट इट अगेन, d by dx u इंटू में v. ये हो जाएगा, u को कांस्टेंट रखा तो देन dv by dx प्लस v को कांस्टेंट रखा देन du by dx. ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखते हैं, एक्स स्क्वायर को बाहर लिख दिया, एंड d by dx ऑफ log x हो गया, प्लस का साइन. अब आप log x को कांस्टेंट रखिए, log x को बाहर कर दिया डिफरेंशिएशन के, एंड d by dx ऑफ x स्क्वायर. क्लियर है ये चीज? ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? किस तरह से हुआ ये फॉर्मूला? u को कांस्टेंट रखा एक बार और v को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर सेकेंड टाइम v को कांस्टेंट रखिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए. ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा. सो एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट. अब log x का क्या डिफरेंशिएशन होगा? 1 by x लिख दिए सीधा सीधा, प्लस का साइन,
ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में log x आपका कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, जरा इसको तरीके से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल हो गया, x प्लस 2x log x। अब बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं log x इंटू में 2x, तो ये तरीका लिखने का सही नहीं है क्योंकि log का ये वाला आर्ग्यूमेंट है, तो ये वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में, इसको आगे लिखते हैं नॉर्मली हम लोग। ठीक है, सो विल राइट लाइक दिस। सो x हम लोग कॉमन ले लेंगे, सो आएगा 1 प्लस 2 log x। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यस, बहुत बच्चों का सही है। ठीक है, क्लियर है। सिंप्लीफिकेशन तो आप पे है, आप जहां तक सिंप्लीफाई कर सको इसको, स्टार्टिंग में वहां भी छोड़ सकते थे x प्लस 2x log x। तो ये सेकेंड वाला क्लियर हुआ सबको, ये प्रोडक्ट वन क्लियर हो गया। ठीक है, सो नाउ विल मूव टू दी कोसेंट रूल। नेक्स्ट रूल पे जाते हैं। कितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए, 4 बता दिए, शायद से 4 बता दिए। फिफ्थ पे आ रहे हैं हम लोग, कोसेंट। सेकेंड स्टेप क्या है इसमें? सेकेंड स्टेप तो यही हुआ ना कि एक्स स्क्वायर को कॉफिशिएंट u को कांस्टेंट छोड़ा आपने, v को डिफरेंशिएट किया, है ना। एक्स स्क्वायर इसको आप u समझो, इसको v समझो। ठीक है, तो आपने एक बार u को कांस्टेंट रखा, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, v को डिफरेंशिएट किया, फिर v को कांस्टेंट रखा, u को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, नेक्स्ट है कोसेंट रूल। बस कोसेंट रूल और चेन रूल, बस 2 रह गए। जस्ट हार्डली 10 मिनट्स लगेगा और। ठीक है, कोसेंट रूल क्या कहता है कि अब आपका जो ये फंक्शन है d बाई डी एक्स, ये आपका डिवीजन में है, इस तरह से u बाई v है, डिवाइड में फंक्शन है। सो इन दैट केस फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस, डिनोमिनेटर का स्क्वायर v स्क्वायर को कांस्टेंट लेते हैं एंड du बाई डी एक्स, छोटा हो गया, v को आप कांस्टेंट ले लो, v इंटू du बाई डी एक्स, यहां पे माइनस होता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, माइनस, सो माइनस u इंटू dv बाई डी एक्स। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। फाइन, ये फॉर्मूला है, इस पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस पे ले रहा हूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पे। लेट्स से d बाई डी एक्स ऑफ, द सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, लेट्स से x अपॉन में log x। नाउ दिस फंक्शन इज इन कोसेंट फॉर्म, u बाई v फॉर्म में, u बाई v फॉर्म में। तो क्या करेंगे इसको, आप इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखेंगे, तो log x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले में v को मैंने कांस्टेंट रखा है ऊपर, सो log x को कांस्टेंट रखेंगे आप, log x आपका कांस्टेंट हो गया, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ u यानी x, माइनस, इसमें माइनस का साइन होता है, याद रखना, प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन होता है, इसमें माइनस का साइन होता है। अभी आप u को कांस्टेंट कर दीजिए, x को कांस्टेंट कर दिया, एंड d बाई डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा ये, बट आसान है ये भी। तो log x यहां कांस्टेंट था, log x dx बाई dx, तो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस x इंटू
log x का 1/x और ये हो गया log x का स्क्वायर। फाइन। तो यहां से ये x और x कैंसिल हो गया, ये हो गया log x इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log x माइनस 1 डिवाइड बाय log x का होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। 1 माइनस log x कैसे आ रहा है? हाउ यू आर गेटिंग 1 माइनस log x? आई डोंट नो, इट शुड बी log x माइनस 1। ठीक है, आ रही है आप लोगों को समझ? किसी को डाउट है? इफ यू हैव डाउट आई विल टेक मोर एग्जांपल देन। विनायक प्रैक्टिस से आएगा ये चीज। डिफरेंशिएशन प्रोबेबिलिटी की जितना आसान नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे, फॉर्मूला जो मैं आपको दे रहा हूं उस पे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, आई विल शेयर सम क्वेश्चन विद यू, देन यू विल गेट टू नो। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं नो डाउट, तो फिर प्रॉब्लम आएगी कब? जब थोड़ा प्रैक्टिस कम होगा। तो इस तरह की जो फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूं, मे भी थोड़ा फॉर्मूले में आपको प्रॉब्लम हो या बहुत बच्चों को हो, तो फॉर्मूले को अपना एक पेज पे लिख के रखिए, फिर क्वेश्चन उसके साथ ट्राई कीजिए। 2-4-4-5 क्वेश्चन यू विल ट्राई, देन यू विल गेट टू नो कि आसान ही है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन अगर डिफिकल्ट लगेगा तो फिर इंटीग्रेशन कैसे करोगे? सो माइंडसेट मत करो ऐसा कि डिफिकल्ट है, बहुत आसान है डिफरेंशिएशन। ठीक है, हाँ, या 12th में मैथ्स हो चाहे नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट इज इजी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इट इज इजी। 12th में मैथ्स नहीं भी है तब भी प्रैक्टिस करो, इट इज इजी। और बिजनेस मैथमेटिक्स जो सेमेस्टर 1 में है इतना डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं कर पाओगे, ठीक है, आराम से कर लोगे, आसान है। अभी फिलहाल एनसीईआरटी रेफर करिए मेरे ख्याल से 12th का डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको इंटरनेट पे, 12th की एनसीईआरटी रेफर कीजिए, उससे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आप कर लीजिए। ठीक है, सो दिस इज ये आपका प्रोडक्ट रूल हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी आप रेफर कीजिए, एनसीईआरटी क्लास 12th का। डिफरेंशिएशन सिर्फ करना और कुछ मत करना, सिर्फ डिफरेंशिएशन, ओनली डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं चेन रूल की। ठीक है, कितने हो गए आपके पास रूल? 5 हो गए ना, 5 फॉर्मूले हो गए। 6th, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं चेन रूल की। चेन रूल में क्या होता है, बहुत बारी एक फंक्शन जो है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा फंक्शन तीसरे पे डिपेंड कर रहा है, या फंक्शन को, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ फंक्शंस को के आर्गुमेंट को करें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। आर्गुमेंट को डिफरेंशिएट करने के बाद ही उस फंक्शन पे आप धीरे धीरे पहुंच पाएंगे। तो कुछ रूल्स ऐसी होती हैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का, जैसे पावर को आप पहले डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे मान लो log x का होल स्क्वायर ऐसा है फंक्शन। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन हम लोग log के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और देन हम लोग log के आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, एनसीईआरटी से, 12th के एनसीईआरटी से मैंने कहा था, 12th के एनसीईआरटी से सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन, ओनली डिफरेंशिएशन। कंटिन्यूएशन और डिफरेंशिएबिलिटी भी मिलेगा आपको 12th में, बट तो वो नहीं करना। ठीक है, सिर्फ डिफरेंशिएशन ओनली।
ये रिपीट नहीं होगा। ये जो अभी क्लासेस चल रही है आपकी, ये क्योंकि कोर्स से जब कोर्स का करिकुलम मतलब कोर्स वाला स्टार्ट होगा तो विल रिपीट दैट ओनली, जो कि हम लोग कोर्स में कवर करेंगे। उसमें कोई डाउट होगा तो दैट विल सी, बट ये वाली क्लासेस रिपीट नहीं होगी। ठीक है, डाउट के लिए विल हेल्प यू आउट आफ्टर दिस सेशन रेगुलर। फिर कुछ सेशन विल प्लान, डाउट सेशन विल प्लान इन फॉर मैथ्स। सो चेन रूल में क्या होता है कि कई बार आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। ये फंक्शन है लेट्स से x, बट इट x डिपेंड्स ऑन y एंड z आल्सो। तो सम टाइम ऐसा होता है कि कई बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, ये फंक्शन मान लो है मेरा x वेरिएबल का नहीं है, लेट्स से लेट मी राइट लाइक दिस, लेट्स से फंक्शन t वेरिएबल में है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले dt अपॉन में dx लिखोगे आप, ठीक है, या dt अपॉन में dz लिखोगे, dz के टर्म में भी लिख दो। लेट मी राइट लाइक दिस, थोड़ा इसको अलग तरीके से लिखता हूं। मान लो इस फंक्शन को मैं ऐसा लेता हूं, दो फंक्शन ले लेता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। हालांकि मैं इसको डिफिकल्ट बनाना नहीं चाह रहा था, बट समझाने के लिए करना पड़ेगा। ऐसा एफ भी है और जी एक्स भी है। जी एक्स एफ एक्स इसका मतलब ये देखो दो फंक्शन हो गया ना, जैसे यहाँ पे स्क्वायर भी है और फिर अंदर में लॉग एक्स भी है, फिर इसके आर्गुमेंट में एक्स स्क्वायर भी है। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आप एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, फिर आप लास्ट में जी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे। तो पहले हम लोग करेंगे इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, फिर प्रोडक्ट में होगा डी बाई डी एक्स इंटू जी एक्स। तो इस तरह से चेन रूल चलता है। नहीं, बाद में क्लास टीम्स पे होगी। अभी क्लास यहाँ पे हो रही है, बट बाद में क्लास एमएस टीम्स पे होगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे थोड़े बच्चे लिमिटेड होंगे ना आपके सेक्शंस के। अभी लिमिटेड नहीं है तो वी कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है, इतने बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट है समझाना चीजों को। क्या समझ नहीं आ रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ब्रैकेट में जी एक्स लिखा है, इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स मल्टीप्लाई बाई, ये अलग से लिखा था मैंने इसको, ये अलग चीजें। ठीक है, इसको अलग एग्जाम्पल के लिए लिखा था, इसको मत लिखना। तो दिस इज द फॉर्मूला। रेगुलर क्लासेस के लिए विल लेट यू नो, विल मेल यू एंड विल टेक्स्ट यू आल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जांपल। लेट्स से मुझे डिफरेंशिएट करना है इसी को, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एक्स, अभी ऑडिबल हूं मैं आपको? ठीक है, सो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आप x मान लीजिए अभी फिलहाल। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? कहेंगे सर x के पावर ये वाला फॉर्मूला लगेगा वापस से, d बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर n, सो n x रेज टू द पावर n माइनस वन। सो 2 है पावर, तो 2 x की जगह पे हो गया log x स्क्वायर की पावर 1। क्लियर है ये चीज? पहले पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, अब मैं log x स्क्वायर, अब मैं अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो विल अप्लाई दिस फॉर्मूला log x स्क्वायर। log के हिसाब से डिफरेंशिएट करूंगा। ये कितना होता है log x का? log x का होता है 1 बाई एक्स। log x का क्या होता है? 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो दो फंक्शन आ गया,
मल्टीप्लाई में, एंड थर्ड हो जाएगा। अब इसका आर्ग्यूमेंट को देखिए, आर्ग्यूमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर, आर्ग्यूमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा, 2x। क्लियर हुआ ये चीज? नहीं, पूरी 12th की मैथ्स कहाँ है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत कल इक्वेशंस बताए थे जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सर ने जो बताया होगा इक्वेशंस और थोड़े से डिटरमिनेंट्स और या मैट्रिसेस बताया है, सर मैट्रिसेस ही आपको जरूरत है, और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीख रहे हैं आप। 12th की मैथ्स आप पलट के देखिए कितना कुछ है उसमें। ठीक है, 12th की मैथ्स जो है उसमें बहुत कुछ है, बट उतना नहीं आपको करना है, आपको जो है बेसिक कंसेप्ट ही करने हैं, और वही चीज मैं आपको करा रहा हूं या सर करा रहे हैं जिनकी आपको जरूरत है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। नहीं पता नहीं आप कहां से आपको इंफॉर्मेशन मिली, बट बीबीए में मैथ्स है, ऐसा नहीं है मैथ्स नहीं है, बीबीए में मैथ्स है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में ये बिजनेस मैथ्स आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में आपके पास क्यूटी है एक सब्जेक्ट। हाँ क्लियर हो जाएगा, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा ही है। थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ोगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो आसान ही है। ठीक है, चलिए कम बैक टू द क्वेश्चन। ये क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर? ये वाला चेन रूल क्लियर हुआ सबको? तो चेन रूल में फंक्शंस को आप, या सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स इजी है एज कंपेयर टू फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में यू हैव पुअर मैथमेटिक्स, एंड सेकेंड में वी हैव ओनली स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। कैलकुलस यूज होगा जब आप रेट वेट की बात करेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे, कॉस्ट को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, रेट को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, तो सब जगह डिफरेंशिएशन यूज होगा। ठीक है, सभी जगह डिफरेंशिएशन यूज होगा, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपका बिजनेस मैथ्स हो, चाहे वो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो। डिफरेंशिएशन यू विल सी एवरीवेयर। इंटीग्रेशन आपको कम मिले, बट डिफरेंशिएशन इज वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन इंप्लीमेंट द चेन रूल। ठीक है, कुछ और फॉर्मूला बता रहा हूं, लिख लीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल। ट्रिगोनोमेट्रिक आपको नहीं आएगा पेपर में, तो ट्रिगोनोमेट्रिक की फॉर्मूले की हम लोग बात नहीं कर रहे। ट्रिगोनोमेट्रिक वाला कम वाइबल है कि आपके उस पे सिलेबस में आए, बट कुछ फंक्शंस ऐसे आ सकते हैं। कितने की हमने फॉर्मूले अभी 6 कर लिए। सेवेंथ, जैसे e रेज टू द पावर डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स, ई रेज टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। e इज एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e की वैल्यू होती है 2.71 इन कैलकुलस। ठीक है, इसके अलावा साइन का, कॉस का, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं। मैं आपको वो फॉर्मूले बता रहा हूं जो आपके लिए यूजफुल थोड़ा बहुत होगा। a रेज टू द पावर x, तो इसका फॉर्मूला होता है a के पावर x मल्टीप्लाइड बाय log a। ठीक है, इसके अलावा sin x, cos x, tan x, sec x, cotec x, cosec x, इन सब की भी डिफरेंशिएशन होती है। जैसे sin x का cos x हो जाता है, cos का माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी होती है डिफरेंशिएशन उसकी भी, बट उनकी डिफरेंशिएशन आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको उतना यूजफुल नहीं है, मतलब बीबीए पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट यूजफुल। इट इज यूजफुल फॉर अदर कोर्सेज, जैसे एमसीए के लिए या बीटेक के लिए हम लोग पढ़ाते हैं, तो उनके लिए यूजफुल होता है, आपके बीबीए के लिए यूजफुल नहीं है। सो विल नॉट डिस्कस दैट पार्टिकुलर कंसेप्ट। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन में इतना ही है, इसी पे आप प्रैक्टिस करते रहें। 12th की आप मैथ्स जो है, एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ए रेज टू दिस को फॉर्मूला के जैसा ही याद रखिए आप। जैसे मान लो एक एग्जांपल में ले लेता हूं, लेट से कि d बाई डी एक्स, इसको फॉर्मूले की तरह ही याद रखिए आप। 2 के पावर में x है, मान लो इसको डिफरेंशिएट करना है, सो आंसर विल बी 2 रेज टू द पावर x इनटू log 2।
ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, एग्जाम्पल दिया है। क्लियर है इतना? सो डिफरेंशिएशन में इतना ही है, खास करके प्रोडक्ट रूल और चेन रूल और जो आपका कोसेंट रूल, ये सब जो कराया उसको याद रखना है। जो सैंपल बेसिक फॉर्मूले हमने किए उसको याद रखना है। ई की वैल्यू कहीं कहीं यूज करनी होती है, बट अभी फिलहाल ई के टर्म में ही आंसर लिखेंगे आप। ठीक है, तो जो फॉर्मूले आपको बताया मैंने आपको, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू दी पावर एन, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सब कुछ फॉर्मूले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ये जैसे ये वाला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू दी पावर एन, ये वाला फॉर्मूला। एंड देन प्रोडक्ट रूल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा आपके लिए, कई बार पेपर में काम में आएगा। ठीक है, देन ये वाला कोसेंट रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कई बार आप क्वेश्चन करेंगे तो ये सब फॉर्मूले की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। एंड लास्ट में जो हमने किया है चेन रूल, चेन रूल ये भी आपको कई बार हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और ये सारे बेसिक्स फॉर्मूले हैं। ई के पावर एक्स का ई पर एक्स से डिफरेंशिएशन होता है, ए रेस टू द पावर एक्स का ए रेस टू द पावर एक्स इनटू लॉग ए। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? किसी को और कोई डाउट? नो? ओके, थैंक यू देन। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो। कल बात करते हैं आगे नेक्स्ट।